In this video, I am speaking about a commercially important seed crop, Areca nut, which is a flowering plant of the Areca catechu species, and I will give information about its distribution, taxonomical description brief, and important uses of these plants and different local names and trade names of this seed crop. Areca catechu is a species of palm which grows in much of the tropical Pacific Asia, tropical Pacific region in Asia, and and parts of the East Africa. And the palm is native to the Philippines, but widespread in cultivation, and is considered naturalized in Malaysia, Indonesia, New Guinea, Taiwan, Madagascar, Cambodia, Myanmar, Thailand, Vietnam, southern China, India, Nepal, Bangladesh, Maldives, Sri Lanka, and parts of the Pacific Islands, and also in WestIndes. And this palm is commonly called the betel tree because of its fruit. The areca nut, which is often chewed along with the betel leaf, betel leaf. Don't confuse with the betel leaf is a leaf from a vine, means climber-like plants of the piper of the same family. The piper and Icalim is the another genus of the another species, and piper betel is the main component species. It is generally betel nut chewed with the left on the betel leaf with a slaked lime and piper betel leaf. And for their stimulant and narcotic effects, generally people use. And the common names of these plants in English are the areca palm, areca nut palm, and betel nut palm, and Pinang palm, and other and catechu. And the local or vernacular names are the supari, in Hindi generally pungi or pungfal. It is most popular name, locally known. And Areca catechu is a medium-sized palm tree growing straight or erect to 20-meter height or tall, with a trunk 10 to 15 centimeter diameter, and the leaves are 1.5 to 2 meter long, pinnate with a numerous crowded leaflets. It means leaves is not simple, it is segmented, divided into different leaflets, and very long in this species, 1.5 to 2 meter long. And fruit is the ovate, oblong, and supported by the persistent perianth, means sterile part of the collectively sepals and petals, that is perianth. And fruit, the ripening gives the yellow and dark brown color, brownish color. And seed contain seeds obtained from the fruits, means oval or the white fruits, and seed contains alkaloids. The main component is the seed of this fruit, and seed contains the alkaloids as arachidin and arcoline, which when chewed are intoxicating and slightly addictive. Means addictive means causing or tending to cause addiction. It is cultivated in the tropical and subtropical regions of India, in gardens,
and orchards on the west coast and in North Bengal. Means towards Darjeeling area, lower portion of the Tista Valley or in the Darjeeling Valley. This portion is called the North Bengal. Just adjacent to the Sikkim and Guwahati regions, Coast Bihar area, and Guwahati eastern part, the rich areas for this for the cultivation of the Areca palm. And its uses, the main is the betel nut chewing. It is used as a betel nut chewing purposes, and the seeds or a betel nuts, commonly called, are an important article of the trade. And Areca catechu is grown for its commercially important seed crop, means areca nut, and which is the main component of the practice of betel nut chewing. And it is popular throughout the Southeast Asia, Taiwan, and some nearby islands, and southern China, Madagascar, and Maldives. The nut itself can be addictive and has a direct link to the oral cancers. And chewing areca nut is a cause of oral submucous fibrosis, and which frequently progresses to the mouth cancers. Actually, the practice of chewing areca nuts originated in the Southeast Asia, where areca palm is native, and the oldest known evidence of the areca nut chewing was found in the burial pit in the Duong Cave site in the Philippines, to which the area areca palms are native. Other uses of this palm it is also used as an interior landscaping species in big, large hotels and malls, especially, and especially for the large indoor decoration purposes. And in India, the dried or fallen leaves are collected and hot pressed into the disposal palm leaflets for the palm leaflets and balls preparations for eating purposes in the hotels and big festivals occasions. People use these plates and bowls made from the areca leaves. And in southern Asia, it is perceived to have medicinal values as aphrodisiac and breath freshener and digestive properties. Though it says it is a cause of the cancer, but some the good properties, especially for the mouth freshness and aphrodisiac and digestive property, is it is stimulating, and it is a common practice to offer. It is a common practice in the south and eastern region to offer these products to the guests in important social gatherings, weddings, and house visit or religious events. This seed crop also has a cultural significance. In Indonesia and Malaysia, there are numerous place names using the words Pinang, Zombie, or Zambe. For example, the cities of Tanjung Pinang, Pangkal Pinang in Indonesia, and Pua Malku in the Maldives, and in India, the Guwahati in Assam, and are some coastal areas of the Kerala and Karnataka, are some of the places named after a local name for this areca nut species.
सुपारी सुपारी नाम जो है एक अरेका कटेचू का फल है, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है इसका प्लांट्स का अरेका कटेचू। और अरेका जो शब्द जो की उत्पत्ति जो है द्रविड़ भाषाओं जैसे मलयालम, कन्नड़ और तमिल से हुई है इसका, लेकिन जीनस नाम जो है इसका अरेका कटेचू है। सबसे पहले इसको लिनियस ने जो है अरेको वो किया है, नॉमेनक्लेचर में दिया है। और यह जो है जो उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स हैं प्रशांत क्षेत्र के, जैसे मेलेनेशिया एंड माइक्रोनेशिया, और दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह जो है उगता है। और इसे पान पाइपर बिटल के पत्तों के साथ जो है लपेट कर लिया जाता है, लेकिन आपको इसको एक साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाइपर बिटल जो होता है पान का पत्ता वो एक वाइन यानी कि एक लता की तरह होती है, और उसमें पत्तियां हृदयकार होती हैं, और वो जो हैं उसका थोड़ा तीखी होती हैं, और उसके जो है अलग ही नाम है पाइपर बिटल, द फैमिली ऑफ द पाइपरेसी। और अरेका कटेचू इज़ द फैमिली ऑफ द एरिकेसी, मीन्स पाम, इसलिए इसको पाम क्या, पाम एक्चुअली क्या है, इज द लाइफ होम ऑफ द ट्री सर्व्स और स्टेमलेस प्लांट्स को कहते हैं पाम वगैरह। और ये सर्व फॉर्म में भी होता है, ट्री फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे पाम जो है आपका जो है एरेकेसी फैमिली का है, ये जिसको पहले पाम ही दिया गया था बेंथम ओकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन रिसेंट में इसको एरेकेसी फैमिली में चेंजेस होने से एरेकेसी फैमिली के अंदर आता है। ये पाम फैमिली का ट्री है जो कि सीधा होता है लगभग 20 मीटर तक, उसमें शाखाएं कहीं नहीं होती हैं, टॉप में उसमें वो लगते हैं फल, और उसको किसी तरह से निकाल दिए जाते हैं जब वो एकदम से पीले या एकदम से ब्राउनिश हो जाते हैं। और फिर उसका जो सीड जो है इम्पोर्टेंट, यही कॉमर्शियल जो है कंपोनेंट है, ट्रेड के लिए यही यूज होता है। और इसके जो है सेवन से स्वास्थ्य पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं मनुष्यों के लिए, खासकर एक कैंसरकारी है। सुपारी को हल्के उत्तेजक के प्रभाव के कारण चबाया जाता है, जिससे कि शरीर में गर्माहट महसूस होती है। लेकिन ये हर इंसान में, अलग अलग इंसानों में, किसी में जो बहुत इसका हैबिचुअल होता है उसको कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जो पहली बार उसको चबाएगा तो वो होता है। फिर जो से लोग ईस्टर्न रीजन में हर घर में लोग जो है ऑफर करते हैं कोई भी गेस्ट को, और उसका जो है पत्ता चबाने में तो थोड़ा अच्छा डाइजेस्टिव भी होता है और माउथ फ्रेशनेस के लिए, लेकिन उतने ही हानिकारक है कि कैंसर का